बोलो. If you have questions, ask now. Otherwise, I'll start. Sir, question number 6 of assignment. Question number 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. सिद्धि कैसे किया आपने? बताओ. सिद्धि ने पूछा था. हिंदी है ना, ln gamma 1 is equal to a when x1 tending to 0. तो वो यूज करके किया. वो जो टेबल में वैल्यूज दिए गामा 1 गामा 2 के, वो x1 की वैल्यू जब टेंडिंग टू 0 है, दैट इज क्लोजेस्ट टू 0, 0.1, वो लेके a की वैल्यू निकाली वैनलार्स इक्वेशन से. और b के लिए भी सेम, जब x2 टेंडिंग टू 0, दैट इज व्हेन x1 इज 0.9, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू निकाली. ओके, गुड. समझ में आया? ये हिंट दिया है ऑलरेडी प्रॉब्लम का. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है. When you look at analog equation and you put x1 equal to 0 or tending to 0, ln gamma 1 becomes equal to a. And similarly, when you put x2 tending to 0 or close to 0, then ln gamma 2 is equal to b. Gamma 1 gamma 2 का वैल्यूज दिया है यहाँ पर ऑलरेडी, राइट? सर लेकिन 0.1 और 0 में 0.1 का डिफरेंस है ना. अरे क्लोज टू 0 बोला है मैंने, इक्वल टू 0 नहीं बोला. यहाँ पर क्या लिखा है? x1 tends to 0. Or you can do another thing. You can draw a plot ln gamma 1 versus x1 and extrapolate to 0. अगर 0 पर ही चाहिए वैल्यू तो इसको ये प्लॉट कर सकते हैं ना अपन. आई हैव शोन यू ग्राफ्स, राइट? ln gamma versus x1 देखा कि नहीं हमने? जब मैंने इसका बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, I have shown you those plots, right? So you can plot ln gamma 1 versus x1 and extrapolate to 0, and then you'll get the value of gamma 1 at 0. समझ में आया? यस सर. So actually that is the way to do it. You cannot assume this value जो सिद्धि ने किया है. You cannot take this value. It will be close. But exact चाहिए तो you have to plot ln gamma 1, ln gamma 2 versus x1 and extrapolate from here to 0 and from 0.9 to 1, and then take the value at that close to 0 and close to 1. ठीक है? ये भी गलत नहीं है. ये सिंपल हो गया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया. उसमें थोड़ा एटलीस्ट ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज हियर इज नथिंग टू डू, राइट? सिद्धि? हाँ सर. राइट. सो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच होता है क्या बुक में जो दिया है? सी व्हेन आई पुट दिस थिंग NP 8.22, दैट मीन्स इट इज नारायणन प्रॉब्लम 8.22. वो चैप्टर में ना प्रॉब्लम 8.22. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग ऑल दिस थिंग्स. दिस मेरा नोटेशन है. व्हेन आई से NE, it is Narayanan example, solved example. When I say NP, it is unsolved problem. This आपको just I'm telling you indication. When I look at this NP, that means Narayanan का unsolved problem 8.27. सर b की वैल्यू एग्जैक्ट आई, a की थोड़ा सा डिफरेंस है. हाँ, तो मे बी बिकॉज ऑफ एक्सट्रापोलेशन ना, तो थोड़ा है ना, होगा, फर्क पड़ेगा शायद. आई डोंट नो. लेट मी सी इफ आई सॉल्व दिस थिंग. सॉल्यूशन है क्या मेरे पास इसका?
Okay, can you see this? दिख रहा है क्या ग्राफ पेपर? Yes, sir. So what I've done is I've plotted actually ln gamma 1 and gamma 2 versus x1 और उसको extrapolate किया है यहाँ पर 0 पर और यहाँ पर 1 पर, and that value I have taken. This is the correct way of doing it. जो point out किया था कि 0 0.1 is not 0 and 0.9 is not 1, that is correct. So we have to plot a graph and extrapolate to 0 and 1 and then take that value close to that. तो ये वैल्यू निकाला मैंने 0.126 एंड 0.110. क्या है आपका सिद्धि? सर बी का 0.1122 और ए का 1.1356. हाँ, तो देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज एक्सट्रापोलेशन से थोड़ा फर्क पड़ेगा. व्हेन यू एक्सट्रापोलेट यू आर नॉट गोइंग टू टेक दिस वैल्यू, यू आर गोइंग टू टेक क्लोजर टू दिस वैल्यू एज फार एज पॉसिबल. तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोज यहाँ पर लिया मैंने जो रहेगा तो पता चल जाएगा क्या है करके. एल एन गामा 1 ये गामा 1 एल एन गामा 1 है, ये एल एन गामा 2 है राइट एक्सेस में. तो स्केल अलग अलग लिया मैंने, बट यू कैन प्लॉट एनी वे, डजंट मैटर. ठीक है, समझ में आया लोगों को? एनी अदर Yes, क्वेश्चंस? sir. सर तो वो मेथड रॉन्ग नहीं है ना? हाँ, बिकॉज दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने वहां से उठा के डाल दिया राइट. हाँ. So you can solve this by drawing actually and extrapolating it. ओके सर. Okay, ठीक है. और किसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है, then let's move further to the next topic. और असाइनमेंट आज सबमिट करना है राइट? Okay, so can you see this? Yes, sir. Okay, so we had covered bubble point and dew point calculations last week. Now let us look at flash vaporization. Flash का मतलब क्या होता है? And any idea? What is meant by flash? Okay, so let's look at this diagram. What happens is this is feed. It is saturated liquid normally. Distillation column में जो feed डालते हैं, it is a saturated liquid. That means the liquid at its bubble point, not boiling point, because it is a mixed feed, more than one component. So it is at the bubble point. So what happens when it goes to the distillation column? Distillation column में enter करता है तो थोड़ा क्या होता है, pressure reduce होता है थोड़ा, and then what happens, the low boiling component or more volatile component that gets evaporated and less volatile component gets liquefied. So it basically separation हो जाता है. जो more volatile component है उसका वेपर बन जाता है और जो less volatile component होता है उसका लिक्विड बन जाता है, and that is called flash. So essentially separates the more volatile component from the less volatile component. Now it depends on the boiling points of the two. अगर boiling point इसका suppose
90 है और इसका 100 है, तो 100% सेपरेशन नहीं होगा, यहाँ पर दोनों आएगा. सो विल हैव y1 एंड y2, दो कंपोनेंट है, तो यहाँ पर यह है x1 एंड x2. बट यहाँ जो है मोर वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगा, दिस विल बी मैक्सिमम, एंड यहाँ पर ये मैक्सिमम रहेगा, लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट. समझ में आया फ्लैश क्या होता है? So this is how we separate less volatile component or more volatile component from less volatile component, and that's what happens inside a distillation column. So the purpose of flash vaporization calculation is to calculate fraction that is vapor and liquid, and composition of vapor and liquid in the equilibrium. Okay, so what is the purpose is कि ये जो fraction आया यहाँ पर suppose feed F है, what percentage of the F is converted to vapor and what percentage is converted to liquid, and what is the composition of the vapor and liquid, right? So that is the purpose is to calculate fraction that is vapor लिया तो liquid automatically मिल जाएगा material balance से, and composition of liquid and vapor phases in equilibrium. This is because these phases are in equilibrium now. यहाँ पर equilibrium हो रहा है, vapor ऊपर जा रहा है, liquid नीचे आ रहा है. Is this understood? Any questions on flash? Okay. So if there is no question, let's do an overall material balance. ये हमने पहले भी किया है distillation column में. So feed is input, output is vapor V and liquid L. So feed is equal to vapor plus liquid. Component material balance will be, if this is a composition of feed, F into Zi is equal to V into Yi plus L into Xi. Right? Xi, I can be component 1 and component 2. And we have seen at equilibrium, K value is defined as Yi by Xi. Okay? So we substitute 3 in 2, and what we'll get is Fzi is equal to, now we are substituting for Yi is equal to Ki into Xi plus Lxi. Xi common nikala, in bracket we get V into Ki plus L, and then Xi we can find out from here is equal to F into Zi upon Ki into V plus L. Right? I can write it like this equation 4, Xi is equal to, यहाँ पर V common निकाला denominator में, तो F upon V Zi upon Ki plus L upon V. So this is a fraction, or rather उल्टा हो गया, F upon V, V upon F. V upon F is fraction which is vaporized. So this is ulta of that. Any questions on equation 4? Okay, so now we know that formula, what you call, composition लिया, summation of composition लिया liquid का, तो summation of Xi is equal to 1. So we can write this thing, summation of equation 4, F by V, F is constant, V is constant, तो बाहर निकल जाएगा, summation of Zi upon Ki plus L by V is equal to 1. Or we can write as summation of Zi divided by Ki plus L by V is equal to V by. This is actually what is the fraction of feed which is vaporized. Any questions on equation 5? Okay, so we can use equation 5 to calculate temperature, pressure or fraction of initial mixture that is vaporized in an iterative manner. देखेंगे हम, we will see a calculation and find out. But this is the equation which is to be used for fraction which is vaporized. ठीक है? So now we'll take equation 4. Equation 4 is nothing but this one, and substitute equation 5 in 4. Right? V by F जो है, ये V by F का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. What we'll get is Xi equal to Zi upon ये पूरा V वाला वैल्यू Ki plus L by V, and denominator में V by F is nothing but this summation
So we'll get summation of Zi upon Ki plus L by V. So any doubts, questions on equation 6? Okay. If there are no questions, then we'll see another form. This for xi, now we'll see for yi. Same thing we will do, starting with the same material balance equations and find out equations for yi. We take the same component material balance, F into Zi is equal to V into yi plus L into xi, and substitute for xi instead of substituting for yi. So what we get is F into Zi is equal to V into yi plus L Ki by yi. And if we take yi common, we'll get in the bracket V plus L by Ki. और अगर V भी कॉमन निकाला V into y तो ब्रैकेट में 1 plus L by V Ki हो जाएगा. And what we'll get is yi from here is equal to f zi upon V in the bracket 1 plus L by V into Ki. So you can write this in this form: y is equal to f by V inverse of fraction vaporized into Zi upon 1 plus L by V Ki. Any questions on equation 9? Okay. So if we know that summation of yi equal to 1, so we can take this summation of equation 9. We'll get f by v common. Summation of zi upon 1 plus L by v Ki equal to 1. Or you can write summation of zi upon 1 plus L by v Ki is equal to v by f. इधर लेके आया इसको. Right? Again, similar to previous one, you can use this equation to calculate temperature, pressure of fraction of initial mixture that is vaporized in an iterative manner. Again, v by f कैसे निकालेगा कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. Any questions on equation 10? Okay. So we will take equation 9, which was y is equal to zi upon v by f. इसको नीचे लेके आया डिनोमिनेटर में v by f into bracket 1 plus L by v Ki, and then we substitute for v by f from here equation 10. ये substitute किया हमने, and what we'll get is y is equal to zi divided by 1 plus L by v Ki divided by summation of zi divided by 1 plus L by v Ki. These are two equations for finding the composition of the liquid and vapor. And equation 10 is for finding vapor fraction. Similarly, we have seen one more equation for finding vapor fraction. Questions: vaporization. Hello. Question है किसी को? No, sir. Okay. So let's solve a problem so that you can see how these equations are used. Let's see. Okay, can you see this? Yes, sir. Okay. So we had solved this problem. Example 8.25. बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट कैलकुलेशन हमने लास्ट टाइम किया था.
There is similar problem, 8.26 solved example. उसमें A part and B part is bubble point, temperature and combustion of the vapor, and B part is dew point, temperature and combustion of liquid. ये similar है. We will not solve this problem. We'll look at the C part. The temperature and combustion of the liquid and vapor in equilibrium when 45% mole of the initial mixture is vaporized. Right? So this is basically flash calculation, and that's what we'll do. Okay. So can you note down all these values, because you are going to solve this thing, right? Let's see data. Feed is 25 mole percent propane, 40 mole percent butane, and 35 mole pentane, and pressure is 1447.114 kPa. Okay, and we have to find the temperature and composition of the liquid and vapor in equilibrium when 45 mole percent of the initial mixture is vaporized. So what is this given? C part में क्या दिया है हमारे को? 45 mole percent is vaporized. का मतलब क्या हुआ? What value is given? अभी ये डेरिवेशन किया उसमें से ध्यान है किसी को क्या था वैल्यूज? नहीं है. ओके, so essentially this is V by F. जो दिया है हमारे को V by F दिया है, मोल फ्रैक्शन जो हमने देखा था ना इक्वेशन में, डेरिवेशन में. V by F, how much of the feed is vaporized. बराबर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So now what we need to do is we need to find out the composition of the liquid and vapor in equilibrium and temperature, right? तो iterative solution है. iterative solution कैसे होगा? हमने बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट किया है. क्या किया था iterative solution में हमने? टेम्परेचर निकालने के लिए क्या किया था? बबल पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए क्या किया था हमने? याद है किसी को? प्रेशर करके हाँ, आवाज कट रहा था आपका. कैन यू रिपीट इट? कैन समबडी रिपीट? किसी को याद नहीं है? देवेंद्र? सर वो इक्वेशन यूज करके सैचुरेशन प्रेशर निकाल के वो रेंज निकालते. क्या प्रोसीजर क्या था? मतलब सर व्हाट वाज द प्रोसीजर? स्टेप्स क्या थे? याद नहीं है. याद नहीं है? कैसे रहे? अभी तो टेस्ट दिया आप लोगों ने, वही यूनिट है ये भी. टेस्ट दिया भूल गया वेडनेसडे को. ऐसे काम चलेगा रे? दीक्षिता?
What are the steps for finding bubble point temperature and dew point temperature? Sir, we assume a temperature and then calculate the vapor pressures at that temperature. Now we are going to assume a temperature here. इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये डन बबल पॉइंट फर्स्ट एंड देन ड्यू पॉइंट, तो उसके पास टेम्परेचर वैल्यू ऑलरेडी है कुछ बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट एंड सम के वैल्यूज ऑलरेडी है इसके पास. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ए एंड बी पार्ट दैट यू कैन सी एट होम. That will be repetitive problem. There is no point in solving that. We will solve only from part C. उसमें कुछ वैल्यू उसने assume किया है because it is coming from part A and part B. So that I'll leave as homework for you. Okay. So let us see part C. So when we look at part C, he has said 45 mole percent is vaporized, right? That means V is equal to 45 mole लिया, feed equal to 100 लिया, right? This is normally we take 100 moles of feed. If we take feed equal to 100, V is equal to 45 moles हो जाएगा. 45 mole percent is vaporized, and L is equal to 55 moles, right? And if we take वही क्वेश्चन लिया था हमने, सपोज V by F, right? This is summation of ZI upon 1 plus L by V KI is equal to V by F था. इक्वेशन डिराइव किया था हमने. This is equal to 0.45 हो गया, right? So what he has done is ये उसने पार्ट ए और पार्ट बी से वैल्यूज लिया है, टेम्परेचर एंड के आई वैल्यूज. इस टेम्परेचर पर के आई वैल्यू उसने पार्ट ए और पार्ट बी में निकाला है. इस टेम्परेचर पर उसने के आई वैल्यूज पार्ट ए एंड पार्ट बी में निकाला है. एंड वी नो जेड आई वैल्यू. प्रोपेन इज 25%, ब्यूटेन इज 40%, पेंटेन इज 35%. So what we do is we find out this is summation, ऐसा नहीं है, summation ZI upon 1 plus L by V KI at these two temperatures. ठीक है, करके देखना आपको कि जस्ट, क्योंकि यहाँ पर मेरे को there's no other option. Yes, sir. करके देखना है. Yes, sir. हाँ, करके देखो. Don't look at these values. Take these values. ZI is equal to पता है 0.25, 0.4 and 0.35. KI मैं बताता हूँ values. I will not share this thing then. I'll tell you the values of KI and then you solve it. ठीक है? So for propane at 366.5 Kelvin, KI is equal to, or KI is equal to 2.3 for propane. ब्यूटेन के लिए 0.9 एंड पेंटेन के लिए 0.4. ZI, you know, feed composition. Propane is 0.25, butane is 0.4, and pentane is 0.35. So equation is summation of ZI divided by 1 plus L by V KI. You can find out this summation at 366.5. First do that, then I'll tell you the values for KI at 377.6 Kelvin. ठीक है, करना है कि नहीं करना है आपको? हेलो. Yes, sir. करके देखना है तो करो. Otherwise, I can just move forward. I can show you the solution and that is it. सर टेम्परेचर कैसे assume किया? वो पहला पार्ट ए और पार्ट बी में किया उसने डी पॉइंट बबल पॉइंट के लिए निकालने के लिए, तो वो टेम्परेचर लिया उसने. सो वी आर अज्यूमिंग अ टेम्परेचर नाउ, राइट? लेट अस अज्यूम अ टेम्परेचर एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी बाय एफ, राइट? जैसे अभी देखा हमने, लेट मी शो यू दिस थिंग बिफोर आई शेयर कर दो मेरे को. ओके, सो ये दिया है, राइट? ये कहाँ गया इक्वेशन? या summation of ZI upon 1 plus L by V KI is equal to 0.45 आना चाहिए, राइट? So we सर दिख assume ना रहा. क्या हो रहा है?
शेयर नहीं हुआ सर। शेयर नहीं हुआ, ओके। अभी हो गया? यस सर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर v बाय f। हमने डिराइव किया था समेशन ऑफ zi अपॉन 1 प्लस l बाय v इंटू के आई इक्वल 0.45, ये आना चाहिए। So we are assuming two temperatures 366.5 and 376.5 and because we know the values of Ki, we know the value of Zi, we know L by V, right? अगर ये 0.45 है तो L by V क्या हो जाएगा? ये दिया है ना, V is 445, L is 455, right? So we know L by V, we know L, we know V, we know Zi, we know Ki value बता रहा हूँ मैं आपको। तो we can find out this summation value at 366.5 and 376.5, right? And this should come as 0.45, but ये नहीं आएगा because this is not the temperature of flash. So we'll find that this is some value at this temperature, this is some value at this temperature. 0.45 नहीं आया, then we have to interpolate between these two temperatures. और interpolation का formula आपको बताया last time, interpolate करने का, right? Assuming linear variation between this temperature and this temperature for this summation, we have to find out that temperature where this V by F is equal to 0.45. समझा क्या? यस सर। देवेंद्र ने फॉर्मूला दिया था, राइट, उस दिन? सर Use that formula which Devendra gave and find out that temperature at which this value will be 0.45. Okay, so let me show you this thing anyway. तो इसने कैलकुलेट किया है summation is equal to 0.4191 at 366.5 and 0.4612 at 376.5. So it is not 0.45, right? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज था, हमारे पास के आई का वैल्यू है 366.5 बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट से एंड 376.5 पर ये टेम्परेचर के आई वैल्यूज था, तो इस पर हमने कैलकुलेट किया ये। बट दिस नॉट द this temperature is also not the flash temperature, this is also not the flash temperature. So now we have to find that temperature in between these two, because 0.45 is between these two values, right? Which will give me this summation equal to 0.45. ठीक है? So let us not worry about this thing, you can see this thing, ये simple calculation है. Now let us do the interpolation, find out that temperature which will give me value of 0.45 for this summation. कर सकते हो? हाँ सर। समझा क्या लोगों को क्या करने का है? देवेंद्र, यस सर समझ। जो फॉर्मूला दिया था ना आपने, हाँ सर। वही फॉर्मूला अप्लाई करने का, अपने को टेम्परेचर निकालने का अभी इंटरपोलेट करके कि ये विच दैट टेम्परेचर विल गिव मी दिस समेशन इक्वल टू 0.45. ठीक है, करके बताओ व्हाट इज दैट वैल्यू. और अगर हो जाता है तो हैंड रेस करने का एंड टेल लेट मी नो द टेम्परेचर विच यू फाइंड. सर 368.43। 368 इज रॉन्ग. सर वो 374.647 आ रहा। गुड, दैट इज राइट. देवेंद्र ने फॉर्मूला दिया था एग्जैक्टली वही यूज करने का, वही यूज किया ना देवेंद्र? हाँ सर। वही वही फॉर्मूला यूज करने का, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला दिया था आपने, ग्रुप पे में डाला था, राइट?
सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। बेसिकली वी आर अज्यूमिंग कि ये दो टेम्परेचर के बीच में लीनियर वेरिएशन है। दिस इज द वैल्यू एट दिस टेम्परेचर, दिस इज द वैल्यू एट दिस टेम्परेचर, तो 3 तो वैल्यू 0.45 कौन से टेम्परेचर पर होगा। Okay, so if you know that temperature is 374.6, then now let us find out the value of Zi at 374.6। कैसे करेंगे? K का वैल्यू भी इंटरपोलेट करना पड़ेगा हमारे को, because we know Ki at 366.5 and we know Ki at 376.5, but we don't know at 374.6, so we have to find Ki values also by interpolation by the same formula at that temperature and use that to find Zi at 374.6। समझ में आया? कितने लोग को नहीं समझ में आया? वांट टू सी हैंड्स। ओके, समझ में आया तो करो प्रॉब्लम। फाइंड आउट फर्स्ट टेम्परेचर विच विल गिव मी समेशन ऑफ that equation, or V by F equal to 0.45, and that for that temperature find out the value of Ki by interpolation, and then use that Ki value to find the value of V by F। और हो गया तो hand raise करेंगे। First find out the value of Ki and raise your hand so that we can compare and see what values you are getting at। Ki का वैल्यू बताओ क्या आया वो टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कितने लोग का हो गया? Raise the hand. First, I want to see how many people have finished interpolation of temperature. क्या टेम्परेचर आया ऋतुजा? 374.6। ठीक है, गुड। और किसका हो गया? रेज द हैंड। आई वांट टू सी ऑल हैंड्स, बिकॉज ये हमारे डबल पॉइंट टू पॉइंट में भी इंटरपोलेशन था। दैट्स आई वांट टू चेक वेदर यू अंडरस्टूड इंटरपोलेशन और नॉट। ये बेसिक मैथ है, नथिंग टू डू विथ थर्मो। यू कैन यूज इट एनीवेयर इन एनी सब्जेक्ट। रितेश हो गया क्या टेम्परेचर कैलकुलेशन? सिद्धि? नहीं सर। फॉर्मूला देवेंद्र ने डाला था ना उस दिन ग्रुप पर। यू हैव दैट फॉर्मूला? हाँ सर, 1 मिनट करती हूँ। ओके, दीक्षिता हुआ क्या? No shortcut. हाँ, टेम्परेचर आ गया क्या? नहीं सर, कर रही हूँ। करो करो। और कौन है? श्लोक हुआ क्या? कर रहे हो सर? विराज? चल रहा है सर। ओके, और कौन है? नुपुर? नुपुर, कैन यू हियर मी? मुर्तजा? नो रिस्पॉन्स मीन स्लीपिंग। प्रियंका गराडे? सो रहे। प्रतीक्षा मोरे? सर करते हैं।
प्रतीक्षा घड़ले, प्रणव कुमार, नितिन, सो रहे सब लोग। महेश चौहान, स्लीपिंग। यस सर, कर रहा हूँ। केतन पाटिल, स्लीपिंग। गौरी पाटोले, स्लीपिंग। दिग्विजय सिंह चौहान, सब सो रहे हैं। भूमिका, सर कर रही हूँ। अश्विनी, सर कर रही हूँ। अभिषेक, कुंभारडे, Surely, sir. कमलेश लाकड़े। देन यू शुड रेज अ हैंड। Yes, इतना टाइम sir. लगना, टेम्परेचर कैलकुलेशन में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। यस सर बोल के ऐसे सोने का नहीं। यू शुड टेल मी द टेम्परेचर। वैभव, यस सर। शिवम, अटेंडेंस नहीं है ये। आई वांट एन आंसर। मोहसिन, सर मेरा 368 आ रहा है, पता नहीं। फार्मूला दिया था उस दिन देवेंद्र ने, सिंपल फार्मूला अप्लाई करने का है। गलत कैसे हो सकता है? सर 374.6 है क्या? हाँ, दीक्षिता हो गया क्या? Sir, 374.6%. ठीक है, अगर वो टेम्परेचर आ गया तो देन फाइंड आउट के वैल्यूज एट दैट टेम्परेचर। तो बस के वैल्यूज हमको दिया है राइट, यहाँ पर एट 366.5 एंड 376.6 पर के वैल्यूज दिया है ये 2.3, 2.6, 0.9, 1.1, 0.4 and 0.5. So we have to interpolate K values now at 374.6 Kelvin. Find out K values at that temperature now, all of you. और हो गया तो हैंड रेस करने का और बताने का क्या क्या आया के वैल्यूज। किसका हो गया के वैल्यूज? देवेंद्र हो गया क्या? नहीं सर, चालू कर रहा हूँ। फाइंड आउट के वैल्यूज एट दैट टेम्परेचर। सर प्रोपेन की वैल्यू 2.51 है क्या? हाँ बराबर। कौन था? ऋतुजा। ओके, फाइंड आउट फॉर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन,
तीनों का के वैल्यूज निकालो एट 374.6 बाय इंटरपोलेशन. Sir, butane 1.05. ठीक है, 1.08 दिया बट चलेगा. 1.05 इज ऑल्सो ओके. पेंटेन भी फाइंड आउट करो. सर पेंटेन का 0.47 आ गया. ठीक है, चलेगा. So once you get these values of Ki, what we need to do is now we need to find V by F and check whether it is coming as 0.45. ठीक है. So now we have the values of Ki, we know L, we know V, we know Zi, right? At 374.6 Kelvin. Find out what is the value of this summation and check whether it is coming as 0.45. If 0.45 आया, that means our temperature is correct. जो हमने इटरेशन किया था ना बबल पॉइंट के लिए, सिमिलर थिंग वी आर डूइंग हियर, बट वी आर डूइंग इट ऑन दिस V by F. जो दिया हुआ है ऑलरेडी हमारा 0.45, वो आना चाहिए वो टेम्परेचर पर. जिसका हो गया V by F कैलकुलेशन, बताओ मेरे को कितना आया वैल्यूज. देवेंद्र कुछ कर रहा है कि नहीं? हाँ सर कर रहा हूँ. करो फटाफट. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V by F by this equation now and check whether we are getting 0.45. 0.45 आना चाहिए. Exactly 0.45, but it should be nearby 0.45. आ रहा है सर 0.45. कितना आया? 0.45 क्या आया? एग्जैक्टली आया क्या? हाँ सर 0.45004 ऐसा आ रहा है. ठीक है ना. अगर जैसे बुक में 0.4542 आया, डजंट मैटर, थोड़ा इंटरपोलेशन में इधर उधर होता है वैल्यू, बट शुड बी अराउंड 0.45, क्लोज टू दैट वैल्यू. So once you get that value, right, that means our temperature is correct. Temperature correct आ गया, then we can use this equation by. हमने डिराइव किया था, वो Zi का वैल्यू है, L का वैल्यू है, V का वैल्यू है, Ki का वैल्यू है. All these values are there, so we can find out the vapor consumption.
Find out the values of vapor composition yi by using this equation. You know all the values now. You know Ki, you know L, you know V, you know Zi. Find out what is yi. Flash. Calculate y values. Denominator common ही रहेगा आपका summation है. So you can calculate this summation, which is all what we have done right now, right? अभी जो हमने किया था ये किया ना. Plus L by K, right? This is the denominator is V by F. Denominator is nothing but V by F, which is 0.45 जो आपका आया अभी. This denominator is अभी आपने calculate किया, and this will keep changing for each component. Y1 के लिए Z1 1 plus L by V K1, Y2 के लिए Z2 1 plus L by V K2, Y3 के लिए Z3 1 plus L by V K3, and this is common 0.45 जो नीचे वाला था. Find out Y1, Y2 and Y3. And if you're done, then raise your hand. क्या है values? प्रोपेन का 37.35, ब्यूटेन का 14.95 एंड पेंटेन का 21.68. 41.95 होगा ना ब्यूटेन का. 14.95. 41 point something आएगा ना. 0.41, right? X Y हाँ is सर. 0.36 something, 0.41 something, 0.21 something, right? ठीक है. देवेंद्र हुआ क्या? हाँ सर. Okay, so once you find this value of y, you can find out value of xi using this material balance equation. Fzi is equal to Vyi plus Lxi. अपने पास f का वैल्यू है, v का वैल्यू है, y का l का वैल्यू है, right? We know yi, you know zi, so we can find out xi value. That is liquid composition in equilibrium. So calculate now xi, x1, x2, x3. और अगर हो गया तो हैंड रेस करने का. In this case, f is equal to 100, v is equal to 45, l is equal to 55. Zi we know, yi we can just calculate, find out xi value. हो गया क्या? नहीं हुआ तो होमवर्क है आपके लिए.
finish it at home, simple calculation है. Okay.